मेहरबान कदरदान साहिबान, पेश करता हूं एक कहानी रख के सबका मान। मामला है गंभीर पर सच है दास्तान। शहर है मुंबई, देश है हिंदुस्तान। भाषाएं हैं अनेक पर एक है जबान। कहते हैं जिसे हिंदी हम सबकी शान। Theatre has existed as one of the oldest performing arts in the world. In Bombay, this art form has always found a special place in the city's itinerary. Amongst the variety of theatre forms and languages that coexist, Hindi theatre is still finding its feet and faces a daunting task in order to sustain. At the Nehru Centre in Worli, theatre group Ank is presenting its play Mitra. Last-minute preparations are on in full flow. The enthusiasm of the man at the helm, Dinesh Thakur, is infectious, but it is passion and not a houseful board which keeps him going. In fact, the lack of an audience has always been a huge problem. बॉम्बे थिएटर अब करते हुए हम लोग को 32 साल हुए हैं। जब बॉम्बे में थिएटर शुरू किया था तो एक चैलेंज ये था कि थिएटर में ऑडियंस नहीं थी। That is a fact agreed upon by most, including National Award winner Sunil Shanbag, a protege of the legendary Satyadev Dubey. He says that this has always been the case. First of all, the numbers have always been small, relatively. Okay, so that's a given. We have never claimed to perform for mass audiences, etc. It has always been a kind of theatre that has appealed to a smaller section of the audience. ये ऑडियंस एक पूरी तरह से ग्रो हो गई, इस्टेब्लिशमेंट हो गया। फिर लोगों ने अपनी चॉइस रखनी शुरू कर दी थोड़ी थोड़ी, या समझ लीजिए धीरे धीरे टेलीविज़न जब आने लगा तो लोगों की चॉइस हो गई कि उनको कॉमेडी देखना है या उनको सीरियस प्ले देखना है। सर वो हीरोइन की माँ की नौकरी मुझसे नहीं होगी सर। क्या बताऊं सर, मुझे वो अंधेरे कमरे में लेगी सर, वहाँ कभी यहाँ हाथ लगा कभी वहाँ हाथ लगा, भाई उसने तुझे भी पकड़ लिया। It is widely believed that the advent of comedy has kept the audience flocking to theatres and the younger generation interested in Hindi theatre. तो ये थोड़ा सी समस्या आ गई है कि आप कोई भी सीरियस बात आज कहने के लिए आपको उसमें एंटरटेनमेंट का गार्ब आपको उस पर चढ़ाना पड़ता है। आप सीरियस बात एज सच नहीं कह सकते। आज की डेट में आप किसी को लेक्चर नहीं दे सकते। Comedy might be big business, but not everyone is boarding the bus just yet. I don't think I would do a play just because it's funny. You know, if it has some meaning and that meaning is conveyed comically, that's a different thing. बहुत दिनों बाद पिता पुकारने के एक अच्छा सुर सुनाई दिया रे, माँ बाप। Another major problem which exists is the lack of good writers in Hindi theatre. Most of the plays are adaptations from other languages. Lack of money in the profession and the respect of the audience towards theatre as an art is shameful at best. तो सबसे बड़ी विडंबना हिंदी में एक और है, वो है स्क्रिप्ट की। स्क्रिप्ट ही नहीं, राइटर्स पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, राइटर्स की प्राइस नहीं है। Writers are part of society, and society is today facing a crisis. I mean, there is a complete seduction of the middle classes by consumerism. The competition today is from a multiplex audience. While people are willing to pay up to 500 rupees for a cinema ticket, they still want to see a theatre performance for free. At the same time, matching the stakes in marketing with the glamour world is impossible. पूरे हिंदी बेल्ट में नहीं है ये रिवाज नाटक देखने का, टिकट लेकर देखने का तो बिल्कुल भी नहीं है। आज जगह जगह गवर्नमेंट के फेस्टिवल होते हैं, टिकट नहीं लगाते हैं, मुफ्त में दिखा देते हैं। क्यों भाई? 2-2 महीने 3-3 महीने एक्टर रिहर्सल करता है, उसको थोड़ा सा मुआवजा दीजिए। आज हम पेपर में ऐड देते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐड देते हैं, हमारे 25-30 हज़ार रुपये ऐड पे चले जाते हैं। अगर ऐड नहीं देंगे तो देखने कौन आएगा? Times of India makes more money out of theatre than any of us in the theatre. At a workshop for young theatre enthusiasts, Katare oversees budding artists, teaching them the craft of stage acting.
most of these youngsters come from outside after trying their hand in television and films. I'm from Hyderabad. बॉम्बे में मेरे को आए हुए 1 साल ही हुआ है। वैसे मैं ग्वालियर से हूँ, मध्य प्रदेश। कुछ सीरियल्स किए हैं, मूवी भी की है, लेकिन थिएटर करने का ये मेरा पहला मौका है। Katare rues the lack of professionalism and the poor skills among the new generation of actors. यहाँ अलग अलग प्रांतों से लोग आते हैं, अपना अपना एक्सेंट लिए। उनको ऐसा लगता है कि वो अच्छा बोलेंगे, सब है, और सबसे ज़्यादा खराब हिंदी वही लोग बोलते हैं। So there is no boundary you have to cross. This is the reason so much filth is there, so much waste is roaming around, कि असली उसमें जो एक्टर्स हैं जो करना चाहते हैं सीरियसली वो पता ही नहीं चलते। मेरी हिंदी बहुत कमज़ोर थी, लेकिन इस 1 महीने के दौरान मैंने बहुत ज़्यादा अपनी हिंदी इम्प्रूव की है, डिक्शन पे काम किया गया है, एंड मैनी थिंग्स विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट टू एन एक्टर। क्योंकि जितने बड़े आर्टिस्ट आज अगर फिल्म इंडस्ट्री में रूल कर रहे हैं, दे हैव फ्रॉम थिएटर्स। शाहरुख, नाना पाटेकर, नसीरुद्दीन शाह, दे आर मेनी लीडिंग एक्टर्स, और बहुत सारे बड़े एक्टर आज भी थिएटर कर रहे हैं। The fact that Hindi theatre has witnessed more film stars entering the stage in the past 10 years than ever before is a testimony to what Katare feels. पूनम ढिल्लो या रति अग्निहोत्री, then you are selling these names. Somebody gets to say जीनत अमान, तो जीनत अमान जो सिनेमा में थी, आप उसे लेकर उसको एनकैश करना चाह रहे हैं, नॉट अ टैलेंट, माइंड यू, वो कभी ग्रेट एक्टर्स नहीं थी। फिल्म पीपल कब आए? जब फिल्म में काम मिलना बंद हो गया या कम अब नहीं चल रहा है, उतना दुकान नहीं चल रही है, तुमको लगा चलो थिएटर किया जाए। If I can get a big film actor to come and work in a play, and as a result that generally boosts the play and gets audiences, why not? I mean, as long as it's a serious, honest attempt. Last-minute preparations are on as lighting and sets are arranged. The show is about to begin. The audience has started coming in. A half-empty theatre tells its own story. In the makeup room, we catch hold of an actress getting her makeup done. Are you a full-time theatre artist or? Full-time. Full-time. Is it a rewarding profession? Definitely. In what measure? In all measures except money. Except money. But then what keeps you going? Well, I'm crazy. Theatres like Prithvi have helped in restoring faith amongst both the theatre groups and the enthusiasts. They have encouraged and promoted Hindi theatre like no one else has done before. Innovation and adaptation have been prime reasons for their survival. पृथ्वी थिएटर जो है वो एक तरह से मैं कहूँगा कि किसी भी थिएटर एक्टर के लिए इट्स अ मैका। हम सबकी कलेक्टिव कोशिश ये रही कि हम यहाँ से पृथ्वी थिएटर से रंग शारदा जाएँ या एक्सपेरिमेंटल में जाएँ या कहीं जाएँ, हिंदी के दर्शक आएँ, लेकिन वहाँ जाने को पता चलता है कि हम जीरो हो गए। जो नाटक यहाँ हाउसफुल है वो नाटक देखने वहाँ नहीं आता। What then exactly is wrong? Is the audience to be blamed? दर्शक को अभी तक ये एहसास नहीं हुआ कि ये प्रोफेशनल वर्क है। I don't think that we have to blame audience for anything. Audience is not to be blamed. There is a sizable audience out there that is desperately wanting, to be intellectually challenged, to be stimulated, which they're not getting from mass media. And I think in theatre, the reason why we survive, even though a lot of our work is mediocre, is because of this audience. One is forced to ask then, is commercial sponsorship an answer? सबसे बड़ी चीज़ है कि अच्छा काम करना है अगर हमें, तो कितने दिन तक आप अपना घर फूंक के काम करेंगे? सरकार की फंडिंग का मतलब है फाइलों पे फाइलें। So you'll have sponsors saying we want a banner on stage, or if it is a cold drink thing, then your character should drink that, or if it is a wine company, then bring in a line, oh, this wine is fantastic. I mean, crudity of the worst kind. It's an insult. Will Hindi theatre manage to survive in such a scenario? It will definitely survive. It has survived because of 3-4 good theatre groups who want कि भाई हिंदी थिएटर जो है वो बॉम्बे में चले। I think all these groups that you mentioned, whether it's IPTA, Yatri or Ank, they all, I think, need new blood, desperately. पूछेंगे सब लोग या तो कोलरी या हंटर वाली। The future of Hindi theatre seems bleak unless some action is taken to change it and suit current audience needs, yet at the same time retaining its core essence.
Hindi theatre as a whole has not been able to rise to the challenges of change. Let me put it very clearly. That is a very critical thing. अगर आप टाइम के साथ चेंज नहीं होंगे तो आप पीछे रह जाएंगे 100%। जब आप एक नाटक करते हैं तो प्रेस की आपसे उम्मीद होती है कि आप कुछ बहुत ही बगावती, कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट करें। मैनेजमेंट की उम्मीद होती है आप कुछ एक्सपेरिमेंट करें, रूटीन से हट के। एक्टर्स की उम्मीद होती है कि कुछ पावरफुल रोल हो। दर्शकों की उम्मीद होती है कि एंटरटेनमेंट हो। इन सबको एक साथ बांधना बहुत मुश्किल होता है। That show has to go on. That show will take place, come what may. I always say, television is smaller than life. कितना 51 सेंटीमीटर कितना हुआ? Cinema is larger than life. 35 मिलीमीटर की एक आंख दिखती है। Life, as life, is only theatre. Do you think you'll stick to the profession considering the kind of unresponsive audience? Yeah, hoping that, someday things will change. नमस्कार और हार्दिक स्वागत। लीजिए आज शाम अंक आपके लिए पेश करने जा रहा है मित्र। ये नाटक डॉक्टर सतीश आठवले द्वारा लिखित मूल मराठी नाटक का हिंदी रूपांतर है। रूपांतरकार डॉक्टर सतीश आठवले। नाटक की कुल अवधि लगभग 2 घंटे 15 मिनट, बीच में एक मध्यांतर। लीजिए पेश है मित्र।